Hello, friends. A warm welcome and continuing the series of taking up very relevant and pertinent themes with respect to different aspects of society, economics, science and tech, and so on. We are taking up here one more very important topic, जो हमें कह रहा है how to make India richer. So the question arises, can we really look forward to the themes जिसमें हम बोलें कि इंडिया रिच कैसे हो सकता है? सो एवरी डे जब हम बात करते हैं कि कितनी ट्रेन्स दिल्ली से स्टार्ट हो रही हैं, मुंबई से चेन्नई जा रही हैं, सो वन एग्जांपल दे आर गिविंग इज ऑफ बिहार. बट आई वुड नॉट एग्री विद द वर्ड कि वो इम्पावरिश्ड ईस्टर्न स्टेट है. वो एक एस्पायरिंग स्टेट है जिसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं. खासकर वी आर ब्रिंगिंग द आइडिया ऑफ फ्लड मैनेजमेंट. सो it is talking about that how to celebrate certain festival like Holi or Chhat Puja. There will be millions of people traveling from here and there. So the one keyword here is internal mobility. So internal mobility and internal migrants. Very, very keyword, very important. Internal mobility, internal migrants, they are pillar of Indian economies or urban economies. Push and pull factor होता है. Lower skilled migrant workers coming to urban cities and the money they are sending back home. सो इनकम डिस्पैरिटी की बात हो रही है, ये हर जगह है वर्ल्ड में. यूएस अपनी बात नहीं करता क्योंकि एक कॉलोनियल और एक तरीके से कॉलोनियल से न्यू कॉलोनियल पावर रहा है. कॉलोनियल तो नहीं कहेंगे, न्यू कॉलोनियल पावर कह सकते हैं. बड़ा अच्छा लिखा कि नंबर ऑफ इंडियंस हु माइग्रेट इज स्मॉल बाय कंपैरिजन विद अदर लार्ज एंड अनइक्वल कंट्रीज सच एज चाइना. तो लार्ज एंड अनइक्वल कंट्री चाइना होगी, इंडिया भी है और रिचर भी है. दैट चाइना इज मोर रिचर आल्सो, बट देन we are talking about how to make India richer. So internal mobility and creation of infrastructure is one point. 400 million Indians हैं, they are migrants and they are moving from one state to another. And when we move forward, we understand the overwhelming reason is marriage. और उसके बाद migration का दूसरा कारण है within state also and outside state. Only 2% women move for work. ये बड़ा ही important एक fact है. 2014 की बात कर रहे हैं कि इंटरनल माइग्रेशन लेवल्स वर लोअर इन ऑल देन इन ऑल बट वन ऑफ द 82 कंट्रीज एग्जाम. यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो उसके मुकाबले इंडिया का माइग्रेशन वीक है. यानी हम अपनी जगह ही सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. 2021 में 35% इंडियन लिव्ड इन सिटीज एंड सेंसस तो अभी आ ही रहा है, तो आई थिंक 38% तक ये हमें डेटा मिलेगा. चाइना में 63% है, इंडोनेशिया में 59% है, तो बाकी लोअर इनकम मिडिल कंट्रीज में 43% है. दैट इज वाई हमारे पास बहुत स्कोप है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का. सो माइग्रेशन एक सर्कुलर इशू है. चिन्मय टुम्बे, हमें उनको कोट करना चाहिए. वेदर इट इज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, हिंदी ऑप्शनल में भी आप चिन्मय टुम्बे का नाम लिख सकते हो, और इवन इन पॉलिटिकल साइंस एंड आईआरबी. 100 मिलियन टेम्परेरी माइग्रेंट्स जो आखिर में घर आएंगे ही आएंगे. लेकिन बड़ा अच्छा लिखा कि लास्टिंग वेल्थ, यानी कि जो वेल्थ है घर बनाने वाला वेल्थ जिसे हम कहते हैं, शांति जिसे कहते हैं, वो तो पूरी जनरेशन जब तक सिटी में नहीं रह लेगी हो नहीं पाएगी. रिटर्निंग माइग्रेंट्स एड प्रेशर टू स्ट्रेन्ड रूरल इकोनॉमीज. अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडियंस मोबाइल हैं? नहीं है, तो वाई दे आर नॉट. अब माइग्रेंट्स, सबसे पहले हाउसिंग बहुत एक्सपेंसिव. दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज जिसे हम बात करते हैं. टेक मैग्नेट की अगर हम बात करें एज बेंगलुरु, वहां पर कनाडिगा और आउटसाइडर वाली एग्जांपल दे रहे हैं ये. और उसके बाद मैं उससे पहले का एग्जांपल करूं, एक बार रूमर्स हुए थे तो नॉर्थ ईस्ट के पीपल हैव टू लीव ओवरनाइट. उसके बाद जो है सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी की बात हो रही है. दूसरा सेफ्टी नेट, यानी कि फीमेल के लिए सेफ्टी और सोशल वेलफेयर की सेफ्टी. एक्सेस टू हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, यानी पूरे इंडिया का हम वन नेशन वन हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड बना रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज विजिबल. सो the article is being written from यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव अ बिट, लेकिन हमारे यहाँ और ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं. तमिलनाडु एंड कर्नाटका वो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं. सेमीकंडक्टर की बात हो रही है. असम के अंदर हम सेमीकंडक्टर वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ प्रोसेस ओवर देयर. टाटा इज आल्सो कमिंग अप विद मोर डेवलपमेंट. सो दैट इज व्हाई इंडिया में अभी अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स की, या फिर जो हम बात करते हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर्स, और जिसकी हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स, वो इंडिया में वेस्टर्न वर्ल्ड और चाइना के मुकाबले कम है. बट देन वी आर गोइंग टू फाइंड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्टरी डेवलपमेंट.
आपका क्या कहना है मानसी, व्हाट यू से विद रिस्पेक्ट टू दिस? जी सर, वी कैन से कि दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज जो माइग्रेंट पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या हम बात करते हैं कि आउट माइग्रेशन ऑफ सरप्लस लेबर शुड हैपन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज हम बात कर रहे हैं। Then important, we can say that implementation and inclusion in a comprehensive and fair manner of the critical emerging technologies for the services sector, so that the again growth is not, it is not again hitting a threshold or the saturation level there. So तो हो रही है connect, वंदे भारत, आपकी आपकी वंदे भारत आई, गरीब रथ चली, आपका अभी और चेंजेस आ रहे हैं, एंड देन यू हैव नाउ यूपीआई आल्सो देयर, ट्रैवल इज इजियर, हाईवेज आर देयर, जी सर। बसों की कनेक्टिविटी इंडिया में बहुत अच्छी हो गई है। तो लेट्स ब्रिंग ऑल दैट एंड वी कैन मूव टू द नेक्स्ट थीम। जी सर। So we do not agree with the fact that India is an immobile republic. Transit orient development भी हो रहा है, cluster based development भी हो रहा है। Even when we speak about मुंबई, मुंबई के अंदर भी अगले 3 सालों के अंदर, मुंबई के अंदर भी अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, थाने और मुंबई की बात करें, तो एक इनर रिंग रोड बन रहा है, एक आउटर रिंग रोड बन रहा है। तो we don't agree with that, that we are not an immobile republic. We need not to move. We are having self-centered economy, self-sufficient economy. तो डोमेस्टिकली भी हम कोशिश यही करें कि हमारा जो सप्लाई चेन है, एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो, वो हर एक सेक्टर से कनेक्टेड होनी चाहिए। So next theme is talking about food, but it is talking about hunger, और हंगर से सीधा हम ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीज पे पहुंच गए हैं। कुछ हद तक सच है, आया भी था, देयर वाज अ सर्वे। सो दिस इज अगेन गिविंग एग्जांपल, दिस इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट। एसेज में आदमी ऐसा स्टार्ट कर सकता है। चित्रंजन याजनिक की बात हो रही है, ब्रिटिश प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन की बात हो रही है। बोथ मैन अपीयर ट्रिम एंड हेल्दी, सेम बॉडी मास इंडेक्स है, और वो कह रहा है कि लेकिन टेस्टिंग जब हुई तो बॉडी फैट जो था डॉक्टर युदकिन का सिर्फ 9.1% था, जबकि जबकि आपका व्हेन इट इज कमिंग टू डॉक्टर याजनिक, इट इज 21%। so this is called YY paradox. So thin fat body type is very important as far as South Asian thin fat body type is concerned. So thin fat, that means dual burden of poverty induced undernutrition and growing overweight population. So 15 to 49 old, 19% women and 16% men are underweight. एक example दिया जा रहा है, around 25% women and 25% men also they are overweight. So on one hand we have the population of undernutrition, on the other hand we have the problem of obesity. दोनों चीजें साथ में झेल रहे हैं। Decade is changing, India is replacing one problem with another. So the decade and a half to 2021, the proportion of thin women even half that of fat double. तो Lancet ने भी बोला, as I was just telling you. Now the question arises that how we are going to, make sure that we are actually, handling this issue in such a smart way. That is the whole point. So the question is that after identification, what we are doing. Gentle way is to say less lean body mass and more fat, and this fat is in the middle, pressuring vital organs. We know that. First culprit to genetics को बोलते हैं, second is Indian diet. Let's focus on that. So West tends to be protein with carbohydrate vegetable on the sides. मसाला लैब बुक में उन्होंने बताया। इंडिया का अदर है, राइस रोटी इज द स्टार्च, ग्रेन कार्बोहाइड्रेट। क्यों, वो भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले मैनुअल लेबर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। वी वर वर्किंग सो हार्ड, वी वर वॉकिंग सो लॉन्ग, but then India got developed, but the roti chapati remained center to the diet. Over consumption of grains ने सबको वो किया है परेशान। इन्फ्लेशन इज ऑल्सो ए फैक्टर कि आपको फ्रेश फ्रूट मीट और वेजिटेबल्स नहीं ले पाते आप। 100 रुपए किलो, 50 रुपए किलो घी है, जबकि वो 10 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। सो वेरी गुड लाइन इज देयर कि 10% ऑफ द पुअरेस्ट क्विंटाइल ये ओवरवेट है इन स्टेटिस्टिकल टर्म्स अगर हम करें। 39% जबकि रिचेस्ट वो जो है वो भी ओवरवेट है। तो गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलते हैं और चल ही रहे हैं हमारे यहाँ। एनीमिया मुक्त भारत की बात है, और उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए भी स्पेशली रेजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम एंड सो फोर्थ। फिर ये बोल रहे हैं रिलीजन एंड कास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम तो ऐसा डायरेक्टली नहीं मानते कि हम किसी रिलीजन स्पेसिफिक या कास्ट स्पेसिफिक की बात करें। आप कहिए एक्सेस टू रिसोर्सेस,
ईट फिश मीट चिकन जो है लोगों की अपनी चॉइस है, एंड देन इट इज सब्जेक्ट टू पीपल्स ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस। पॉलिटिकल कल्चर इसको हावी नहीं कर पाया है, ना कर पाएगा। एनिमल प्रोटीन इज रियरली प्रायोरिटाइज होना चाहिए, है सेंट्रल इंडिया में है, और मैरीन फूड और सी फूड आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे है। एग बहुत सारा उसका पार्ट नहीं हो पाता व्हेन यू पोलिटिसाइज द होल इशू। उसके बाद बड़ा अच्छा एक पॉइंट बोला, फूड शोविनिज्म। फूड शोविनिज्म का मतलब है कि भाई हम वेजिटेरियन नहीं खाएंगे, क्योंकि उससे जैसे यहाँ लिखा भी गया है कि वो नहीं होना चाहिए। बट देन डेफिनेटली हमारे पास प्रोटीन डाइट के लिए है, हमारे पास पल्सेस हैं, हमारे पास स्प्राउट्स हैं, हमारे पास सोया है, हमारे पास पनीर है, पोटैटोज टमाटोज ग्रीन चिली, ये हम लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। यू नो सो दे आर गिविंग एग्जांपल्स, फूड नेशनलिस्ट एक इन्होंने एग्जांपल बताया। सो इंडिया इज गेटिंग रिचर सेल ऑफ पैकेज एंड प्रोसेस फूड। So per person purchase of calorie dense foods is a very good line. Per person purchase of calorie dense foods is a benchmark कि आप salty snack, sweet snack, edible oil जो आप कर रहे हैं, तो आप कितना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। So Indians are now spending less on cereals, pulses and vegetables and more on processed foods. ईटिंग आउट एंड टेक अवे, वो तो मैंने बात ही की है, जोमेटो है, स्विगी है, 10 मिनट डिलीवरी है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने भी शुगर और सॉल्टी हैवी फूड्स को आपको कर दिया कि आप भटूरे खाओ रोज, और आप जब मूड खराब हुआ तो आपने पिज्ज़ा मंगा लिया, या आपने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई। लेकिन कोल्ड कॉफ़ी भी अगर आप पीते हो और वो लेस शुगर की है तो दैट इज अमेजिंग। लेकिन इफ इट इज हैवीली टूवर्ड्स उसके अंदर भी आपने शेक बना दिया उसको, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो रेगुलेटरी बॉडी है, दैट द रेगुलेटरी बॉडी मस्ट कम आउट विद द इंडेक्स, मस्ट कम आउट विद द रेगुलेशंस, मस्ट कम आउट विद द अवेयरनेस, दैट्स द ओनली वे। अल्ट्रा प्रोसेस नेशन इन्होंने हमें बोल दिया है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो गए, डायबिटीज हो गए, थायराइड हो गया, and Indians are getting fatter. That's what they are saying. If we move forward, then politicians and policy makers, they are not keeping it part of manifesto. लास्ट में एक्शन लिया जाता है, कार्डियक अरेस्ट लोगों को आ रहे हैं। फूड लेबलिंग स्कीम में भी यू नो 5 स्टार प्रोडक्ट का जैसे हम बात करें या 3 स्टार प्रोडक्ट की बात करें, वी मस्ट डू दैट। हम अचार को अब वैल्यू नहीं देते, उसकी जगह हम चटनीज पे चले गए हैं। So I think there is a way ahead for us in food processing. Challenges must be adhered to. It's a very wonderful and a good way because all the ideas are being brought here. Divya, what do you say? You can quickly wind it so we can move forward. फूड सेक्टर की एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू भी 42,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक लॉन्च करने के लिए। तो उनको प्रमोट किया जा सकता है। जब हम बोलते हैं लैंड होल्डिंग्स की, तो वो स्मॉल एरियाज मिलता है। फूड सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो उनकी ही है। तो उन्हीं के बेसिस पे, जैसे बिहार की बात है तो बिहार में और इंडिया का 70 से 80% मखाना होता है। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो उस तरह से जो सीजनल इनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है, तो उन चीजों को भी कंट्रोल या फिर सर एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है सर। और Okay, हेल्थी डाइट let's move to the next one, please. The theme says that inside the world of crazy rich Indians. Now, the one who is writing, the Economist, they know that the new market will be India and China only. India is more democratic and accessible in so many ways. So they want to also squeeze out, and that's why they are focusing upon it. The new wealthy elites are younger and more adventurous than the old lot. Please keep in mind that the old lot was also adventurous, but maybe more broad minded, maybe more holistic, maybe more grounded, which may not be the new one. And there are reasons for that everyone want to showcase. So मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी की बात हो रही है, मार्क जकरबर्ग आए, बिल गेट्स आए, रिहाना आए, लेजेंड्स आए, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इंडियंस ने भी टीवी पे देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा, उसको फॉलो किया, फेस्टिविटीज की बात हुई। तो अंबानी एंड देयर फेलो, एक वर्ड यहाँ पर है प्लूटोकार्ट्स, यानी उन जैसे और कुछ लोग, बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज वेल्दी। So Forbes के accordingly there are 186 of them in India which are like them, and far more consequential are dollar millionaires जिनका हर साल रैंक बढ़ रहा है। जैसे हम बात स्टार्टअप है, बिजनेस है, बाकी यू नो
जैसे आपके जीरोधा टाइप लोग हैं, जो लोग डिफरेंस मेक कर रहे हैं, एंड दे हैव एन आउटसाइड इन्फ्लुएंस रिलेटिव टू देयर नंबर्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। और वो अपनी वेल्थ के लिए हेडलाइन रोज नहीं बनाते, क्योंकि देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन ऑफ रिच, बट हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जिसके पास $1 मिलियन से ज्यादा पैसा है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। अब इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ प्राइमरी, इन्फ्लेशनरी हो सकता है नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में लार्ज सी फ्लड मुंबई होम लेने के लिए आपको 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तक, आपको 17 करोड़, 50, 40, 30 करोड़ तक आपका जा सकता है बजट। यानी एक टाटा पंच कार को खड़े करने की पार्किंग के लिए आपको हो सकता है कि आपको 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया खर्च करना पड़े, बट इट डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु होल्ड इलिसिट कैश बिकॉज ऑफ रियल स्टेट, बिकॉज ऑफ अदर बिजनेसेस, because of political culture. So India had around 8,50,000 millionaires in 2022. And then we are adding 4,73,000 from a decade earlier. Even we speak about Mumbai, Asia is one of the most wealthiest cities, जिसमें maximum number of millionaire है. We are not speaking here about the inequality. पर वही, क्या धंधा कर रहे हो आप, पैसा किस चीज से आ रहा है, ये वाली बात। क्या सोशल कंट्रीब्यूशन हो रहा है उससे? टैक्स इज ओनली वन सोशल कंट्रीब्यूशन। Then economy is also rebounding. That's right, what you're saying. Wealth managers expect number of dollar millions to expand by 50 to 20% every year. कोई डेटा नहीं है, लेकिन एक तरफ दूसरा गोल ये भी है, हम ही यूएई में भरे हुए हैं, हम ही जो है दुबई का वो ले रहे हैं, हम ही यूएई के, हमें वहां का गोल्डन वीजा चाहिए। आप कौन रहा है? कहीं पॉपुलेशन ही नहीं है, जाओगे कहाँ? एंड देन वी लुक फॉर लाइक माइंडेड पीपल। माई क्वेश्चन अराइजेस की जरूरत क्या है? वेल्थ इनइक्वलिटी तो नहीं होना चाहिए, उसको कम स्प्रेड होना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट, you are not making any difference, especially when the resources are finite. अब लेकिन जो सेकंड टीयर सिटीज हैं, जैसे इन्होंने कहा, वहां पर भी अब आपको मिलेनियर्स मिलेंगे। इंदौर, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, बरेली, सॉर्ट्स ऑफ सिटीज जहां पर अर्ली जनरेशन में बैंकर्स पूछते भी नहीं थे, अब वहां पर जो है आपको मर्सिडीज, और जैसे लुधियाना है, जालंधर है, जोराहट है, $1 million इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग अप। सो दिस इज अ गुड थिंग, बट देन इट मस्ट स्प्रेड। अफसोस की बात यह कि उसमें भी हम दिखाने पे खर्च कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हुआ है, इंडस्ट्रियल शिपमेंट्स बढ़ी हैं, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा है, हाई स्पीड इंटरनेट हुआ है, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स आए हैं, वेल्थ मैनेजर्स भी इसीलिए कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। एवरेज एज ऑफ वेल्दी अब जो है मीडियन एज 50, नाउ 40-30 होती जा रही है। आप देखिए, मैनी फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, दे आर मेकिंग, जैसे वेफर्स बना रहे हैं, पोटैटोज वेफर्स, बिल्कुल सही बात है, क्लोथ्स हैं, पॉपरडम्स हैं, एसेंशियल गुड है, जो मतलब उससे आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ऐसा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बड़ा कर रहे हो, स्टॉक ऑप्शंस में डाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास वैल्यूज भी हैं उनको, सही बात, और वो होना चाहिए। जो ये देखिए, आनंद राठी वेल्थ का कहना है कि वो अराउंड 10,000 क्लाइंट्स, जिनका जो टोटल वेल्थ 6 बिलियन से ज्यादा, उनको मैनेज कर रहे हैं। दे आर मच मोर कैपिटल विद कैपिटल मार्केट्स, unlike the previous generation. Diversification is the key. अब वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं लगा रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी, सोशल कॉजेज, वेंचर कैपिटल, इवन सोशल स्टॉक्स की बात भी हम करते हैं। प्लेंटी ऑफ गोल्ड, सेकंड होम्स अब्रॉड फैल रहे हैं हम। फॉरेन हॉलीडेज आर ए कॉमन इंटेलिजेंस, फैंसी कार्स, मर्सिडीज बेंच is thinking that India will become the third, biggest market from the fifth. European luxury brands, hotels. लास्ट ईयर डियोर ने एक शो किया था, स्विच वॉच कंपनी का रिकॉर्ड तो है, सलमान खान जी भी अभी वर्ल्ड के सबसे कॉस्टलीस्ट वॉच पहने हुए थे। टाटा तो बात है, टाटा का प्रेजेंस तो है स्मॉलर सिटीज में। सो इफ इट इज मेकिंग गुड फॉर एवरीवन, एवरीवन मींस सब्सटेंशियल लॉट, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड द न्यू एयरपोर्ट विच इज गोइंग टू ओपन, द फिफ्थ ऑफ द पार्किंग लॉट इज रिजर्व फॉर द प्राइवेट जेट्स। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि क्या रोक सकता है उसको? पॉलिटिकल, रेगुलेटरी और टैक्स चेंजेस। रिच मस्ट बी टैक्स्ड, दैट इज द ओनली वे। Risk taking in investment and free spending consumption are driven by confidence among the rich. It is not true completely. Risk taking in investment and free spending consumption is driven by the lack of regulatory and lack of standard scientific and also developed country like measures in the first hand. It is going through the loopholes, it is going through bribing, it is going through corruption in many ways. So they are immune to the domestic inflation, but not the rest of the 90% society.
there must be more taxation on luxury spending and also on disposable income. रिच भाग रहे हैं, जा रहे हैं, हैंडले एंड पार्टनर्स ने जैसे बताया, हाई एंड इमिग्रेशन हो रहा है, जाओ आप 7,500 इंडियन मिलियनर्स मूव अब्रॉड। मैनी आई जस्ट टोल्ड यू, लंदन, दुबई, सिंगापुर में दूसरा घर ले लिया, ले लीजिए आप, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा लीजिए, लास्ट में तो इंडिया ही है। ये सच है ये बात। सो प्रोफेशनल्स विद इंटरनेशनल फर्म्स आर आल्सो हाईली मोबाइल, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया इज आल्सो प्रोवाइडिंग, सो मैं ऐसा मानता हूँ। क्लीन एनवायरमेंट नहीं था 1980s में लॉस एंजलिस का भी। सो इंडियंस न्यू रिच आर पेट्रियोटिक ग्रुप, दे मस्ट बी, दे शुड बी, when they are came to give back and help improve the lives of other Indians. They would like to become part of change of India like the way we are trying to do. As rich as you get, you cannot do anything about the pollution. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। They are not coming up. They believe that government will do like the way in Corona. What the rich did in times of Corona. Please share any one of you. So let's see things in a more critical way and a more confident way, not be snobbish and not cynical, but then we must see a bigger picture. Mansi, add one point and we move to the next one. Ji, sir, we can just ensure that the per capita income growth should happen in an equitable manner, as we are seeing that tier 2 or tier 3 cities, they are also being included in this growth journey and the trajectory of India. Yes. Demand for uranium is booming, but who is benefiting? This time also in general studies paper we had a question, India with Central Asia. So we can learn. Putin, Russia's president, and Xi Jinping, China's leader, attending annual assembly SCO. ठीक है, यूरेशियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप है, अस्ताना, कजाकिस्तान कैपिटल, एंड कजाकिस्तान प्रेसिडेंट Qasim Zomrat Tokayev and Mr. Z emphasized on the need to strengthen cooperation in energy investment and mining. No limit friendship between China and Russia is being tested because both are trying to get the best out of Kazakhstan. War in Ukraine, Europe's dependency on Russian oil and gas has shown. Boost to nuclear advocates and increase the demand for uranium. Global uranium production is going to reach over 75,000 tons. And uranium prices have fivefold multiplied, heavily driven by China's demand. Kazakhstan को benefit होगा, largest producer and exporter of mined uranium in the world. It is accounting for 43% of the global supply. Second number is of Canada, and it is rapidly expanding its production capacity, and it is coming to 31,000 tons by 2025. Now, Kazakhstan is providing 25% of the American needs. Its biggest customer to China, half of export go there. That is 75% of China's European uranium intake is from Kazakhstan. China National Uranium Corporation has signed so many joint ventures with the local operators. 60% of the future uranium production will be with China. Uranium transport link बनाने जा रहे हैं। इंडिया की तो चर्चा नहीं हो रही है, बड़े दुख की बात है। Other countries are likely to intensify. Russia is trying to cement its influence, and it is trying to build a nuclear power plant. The government will hold referendum कि plant बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए. Most of the Kazakhstan's oil exports have gone through pipeline that ends up in Russia, and are shipped from Russia port, and we are saying that Russia already controls 25% of the production in Kazakhstan. Like an American ban on European uranium enriched in Russia will soon kick in. Let's see what happens. That's what it is talking. And this will be prompting the West to devise more ways to import mined uranium from Kazakhstan directly. But I'm very surprised that nobody is talking about even India. So we have to identify that India is also having a stake in Kazakhstan. We are also the one of the importers in one way, but they're not in such a big way like the way we speak about Russia and China. We must that perspective because Kazakhstan and India is also having a fair share of great deep partnership. But then without that, we are not going to have.
Next, please. But it was a very good and very broad based article. India को क्या करना चाहिए? That we must be thinking about. India is very important to see, and that is very important to identify. Because the Indian development matters, and in the longer term, India is going to make sure that it is having enough connectivity and also enough pathways so that it is able to get Kazakhstan or even whole Central Asia as a kind of a bigger umbrella or a kind of a great bonhomie between India as an emerging power and between the Central Asia. The next thing that we are talking about is on climate change is making monsoons more dangerous and unpredictable as we see in the coming years. But even in this regard, we have to understand that it is not just the monsoon. We have to see what are the precursor for the same. Because the people in parts of India and South Asia, they are expecting more changes and they are expecting more, more and more as India is developing more extreme rain days. But here we can take up the definition that since 1963 it is giving that rain is 24 hours, and then it is all we are also talking about how since 1966 and then 150 of precipitation in 24 hours. That is what is called extreme rain day. So global warming, and then secondly we are talking about it is going to help irrigating crops, replenishing groundwater, and the different kind of developments can only take place when the monsoon is there. But it is being affected by huge factors. The huge factors includes that are we able to forecast in the right way? The long dry spells, they are very important. And secondly, the going down of water in the reservoirs in Central and South India. Warmer atmosphere can hold more moisture. Warmer oceans means more water evaporates into it. So more than 5% of more precipitation. The more warmer is atmosphere, more moisture is going to hold, and then more precipitation is going to be there. So there will be rise in the degree Celsius of the global temperature. This extra rainfall will be dumped in an extreme hyper local rainfall will be there. The places will be changing, and one can say that even the places which are not witnessing any rain, they will also be greatly influenced. India's agroclimatic zones must become more resilient and must become more future oriented and must have institutional measures. So unpredictability, can we say so? ISRO is working for the same. We have more programs, we have horticulture, we have floriculture, we have for cereals, and we have even agriculture startups. These are going to help us to manage and to understand what is happening. As far as northern state, they are giving example of Uttar Pradesh, which could end up hosting 50,000 rain sensors. Then we are also talking about South India. In South India, we have retreating monsoon, and other agroclimatic zones are also they are seeing certain kind of changes. But I'm very sure whether it is spices, plantation crops, soya crops, cotton, fruits, or even when we see the northern belt with respect to apricots, apple, and even variety of other uh, plantations and other kind of foods and even fruits, there will be uh, there will be a lot of challenges. But then India is moving forward with a great willpower, zeal, and a great technical expertise. So, Mansi, would you like to add something over here before So we we wind can up? say that, yes, again, on the agriculture from the perspective of food security, we are working upon climate smart agriculture, climate resilient agriculture, drought resistant varieties, or we are taking into consideration how technology can also help. Then in terms of, sir, urbanization, we are talking about smart cities mission. So in terms of planning, like the basic things, the basic necessities like drains, they shouldn't be clogged. So these are some of the focus areas where we are talking about the ease of living, adaptation, and then mitigation with the impacts of climate change. Okay.
So these were some of the important takeaways for us, and we will revisit. हम पॉइंट्स बनाएंगे, बात को समझेंगे, जो कर सकते हैं साथ में लेंगे, and then we will try to imbibe and move forward with confidence, clarity of thought, and lot of exuberance. There are no shortcuts. Thank you very much. Wishing all of you all the best. Thank you, sir.